Hello students, welcome back to my YouTube channel Math Buddy. Here I have started mathematics lecture series for 11th NCERT and this is our 16th lecture. In previous lecture we already studied few identities and trigonometric functions, okay, related to trigonometric functions, and this is we are going to study now trigonometric functions of sums and difference of the two angles. So we know that these few identities we already studied. Number one, sine of minus x is equal to minus sin x. Okay, since it is odd function, cos of minus x is equal to cos x since it is even function. Then third identity is cos of n pi plus x is equal to minus 1 raised to the power n cos of x, cos of x, and fourth, sine of n pi plus x is equal to sine x simply. This is the periodic cycle. Also, what if uh, cos of x plus y, where x and y are the two different angles. हमें ये तो पता है कि अगर सिंपली इस फॉर्म में अगर एंगल आ रहा है तो ये ऐसे होगा, बट व्हाट इफ दिस n इंस्टेड ऑफ दिस n पाई देयर इज द डिफरेंट एंगल. तो इसी का प्रूफ हम आज देखने वाले हैं. आज वही डिस्कस करने वाले कि cos of x plus y is equal to y. What? Suppose we don't know this formula. So how to evaluate this? Uh, consider a unit circle having center, origin of the Cartesian system. So suppose this is our Cartesian system, x, y, x dash, y dash. Okay, and suppose this is the circle, unit circle. This is point P1. Suppose this point is P2 somewhere, and this point is P3, and suppose this point is P4, where this has condition. Suppose this made an angle minus y, this made an angle y, and suppose this angle is x. Okay, so we know that the conversion from the Cartesian coordinates to polar coordinates, that is x is equal to r cos theta होता है और y is equal to r sin theta होता है. According to that, here theta is equal to x and this x is nothing but these coordinates, polar coordinates से यहाँ पे जो भी कुछ होंगे x dash y dash भी बोल सकते हो आप. Okay, so polar to Cartesian conversion, Cartesian to polar conversion ये आपको 10th में ही हुआ है. So this point P1 has coordinate 1, 0 and the polar coordinates are cos 0, sin 0. यहाँ पे जरूरत नहीं पड़ेगी वैसे, but for the point P2 the polar coordinates are x angle made कर रहा है ना, x angle बना रहा है, तो P2 has coordinates cos x, sin x y, because instead of this r, this is, since it is unit circle, this radius is 1. Okay, so these are point for P2, and for P3 this is x plus y angle, is it? So cos of x plus y, sin of x plus y, these are the coordinates for this P3, and similarly for point P4 this made an angle minus y with x axis, that's why it is cos of minus y, sin of minus y. Here I am writing clearly these 4 points. P1 is equal to cos 0, sin 0. Okay, that is 1, 0. These are the points. P2 is the point cos x, sin x, since it made an angle x from the x coordinate. Okay, so this is the P3 point, cos of x plus y, sin of x plus y.
and this P4 point is simply cos of minus y है यहाँ पे, तो minus y, we know that this cos of minus, since it is even function, cos of minus x is equal to cos x, that is simply cos of minus y is equal to cos of y, and sin of minus y is equal to minus sin of y. सिंपली आप यहाँ पे लिख सकते हो, या फिर आगे जब मैं क्लेरिफिकेशन दूंगा यहाँ पे तब आप ये कर सकते हो. So these are the points, and we here we can see that simply connect this P1 and P3 and connect this P2 and P4. Okay, since it is minus y angle and since it is plus y angle, this P3O, center O, P3O P1 is the triangle which is congruent to P4O P2. Okay, so here P3O, triangle P3O P1 and triangle this P2O P4, P2O P4 are congruent. Congruent है मतलब क्या? These all sides, corresponding sides are equal because this angle is same. This is y, this is minus y in a negative anti-clockwise direction, but it is same angle as this one. So यहाँ पे जो है ये वाला एंगल और ये वाला एंगल सेम है, that's why it is, these are the congruent. So this P3 P1 distance, P3 P1 and P4 P2 distance are equal. That is, this implies distance P4 P2 P4 P2 which is equal to distance P3 P1 P3 P1, and we know that the distance formula, that is if P is equal to suppose point है x comma y and Q point है suppose x dash y dash, then distance PQ is equal to क्या होता है in square root x dash minus x whole square plus y dash minus y whole square. This is the distance. So हमें निकालना है ये distance और ये distance और इक्वेट करना है simply. Distance P4 P2 is equal to distance P3 P1. Now we will calculate distance P1 P3 first. P1 P3 first. You know that this P1 point is this, that is 1 comma 0, and P3 is cos of x plus y sin of x plus y. So we will take its square. Square is again equal, square भी equal होगा यहाँ पे, है ना, बोल सकते हैं क्योंकि ये स्क्वायर रूट निकालना है सिंपली हमें, इसलिए तो 1 माइनस कॉस ऑफ P1 P3 में निकाल रहे हैं कॉस ऑफ x प्लस वाई होल स्क्वायर माइनस यहाँ पे, है ना, यहाँ पे प्लस होगा, प्लस इस 0 माइनस साइन ऑफ, तो ये साइन का माइनस आएगा, ठीक है, 0 माइनस साइन ऑफ x प्लस वाई इट्स होल स्क्वायर विच इज इक्वल टू, सॉल्व करो इसे, 1 स्क्वायर माइनस 2 टाइम्स कॉस ऑफ x प्लस वाई प्लस कॉस ऑफ x प्लस वाई इट्स होल स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर ऑफ x प्लस वाई. ओके, और स्क्वायर ऐसे भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है. दिस इज व्हाट equation 1, distance P1 P3 square. Now we will calculate distance P2 P4 square, and that is nothing but the cos of minus y. Cos of minus y is nothing but the cos y simply. So cos y minus cos x whole square plus sin y minus sin x whole square. Sin y minus sin x. So sin y is simply here minus. That's why we will calculate this. Okay. So cos
square y minus 2 cos x cos y plus cos square x माइनस ये प्लस हो जाएगा साइन स्क्वायर y, यहाँ पे माइनस कॉमन ही निकालो, फिर माइनस से मल्टीप्लाई करो 2 टाइम्स माइनस यहाँ पे स्क्वायर है ना, तो ये प्लस आएगा, ये भी प्लस आएगा, साइन ऑफ y 2 टाइम्स साइन x साइन y प्लस साइन स्क्वायर x. Okay, so this is what second equation. Now equate these two equations. We will get simply 1 minus 2 cos of x plus y plus cos square x plus y plus sin square x plus y, which is equal to cos square y minus 2 cos x cos y plus cos square x plus sin square x plus 2 sin x sin y plus sin square x. So here cos square x sin square x is 1. Here cos square y, sorry, this is our, I think, sin square y. Here sin square y. Okay, so this cos square x and sin square x is 1, and this cos square y sin square y is 1. So 1 plus 1 ये 2 बन जाएगा, that is 1 minus 2 cos of x plus y plus cos square x plus y sin square x plus y, ये क्या बनेगा 1 again, that is 2 plus लिख सकते हैं इसे 2 minus 2 cos of x plus y, which is equal to 2 minus 2 cos of x cos y and plus 2 sin x sin y. Okay, so 2 get cancelled. Here minus 2 cos of 2 कॉमन निकालो, 2 get cancelled, then माइनस से जब मल्टीप्लाई करोगे दोनों साइड तो आपको मिलेगा cos of x plus y is equal to cos x cos y minus sin x sin y. Okay, so this is what cos of x plus y. So cos of x plus y यहाँ पे क्या बनेगा cos x cos y minus sin x sin y. So this is what the proof of this formula cos of x plus y. Similarly, we can find cos of x minus y. Cos of x minus y, just replace this y by minus y. So we get cos of x cos of minus y minus sin of x sin of minus y. But we know that cos of minus x is equal to cos x. That's why it is simply cos x into cos y, and this is sin x sin minus y. Sin minus y here is minus sin x, that is minus minus plus बन जाएगा sin x sin y, hence it is cos of x minus y. So this is number sixth. Okay, so cos of x plus y भी मिल गया हमें यहाँ पे, cos of x minus y भी मिल गया, and these are few identities. We can find other identities also by using this sin of x plus y, cos of x plus y. Okay, before that we will see few identities. I hope you understand this concept, this proof for this cos of x plus y. Okay, so हमें अब देखना है कि सेवेंथ आइडेंटिटी बोल सकते हो इसे, cos of y by 2 प्लस x क्या होता है, देन नंबर 8 cos of y by 2 माइनस x क्या होता है, देन 9 देखना है हमें sin of y by 2
प्लस एक्स वगैरह ये बाद में देखेंगे, पहले इसे देखो। cos of pi by 2 plus x, we know that cos of x plus y is equal to, x is suppose pi by 2 and y is suppose here x, तो ये x plus y का फॉर्मूला यूज करो, that is cos of pi by 2 cos x minus sin pi by 2 sin x. Okay, but we know that cos pi by 2 is 1 and sin pi by 2 is, sorry, sin pi by 2 is 1, cos pi by 2 is 0. So this will become, this implies minus sin x. Hence सेवेंथ का जो आंसर आएगा यहाँ पे, दिस implies माइनस साइन एक्स. cos ऑफ पाई बाय 2 प्लस एक्स जब भी है वहाँ पे माइनस साइन एक्स बन रहा है. एक्चुअली ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाय 2 अगर है यहाँ पे, ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाय 2 मतलब अगर 3 पाई बाय 2 प्लस एक्स भी अगर है तो भी क्या बनेगा, ये माइनस साइन एक्स. ऑड मल्टीपल जब भी आएगा यहाँ पे आपका नेगेटिव साइन लगेगा और साइन एक्स. ठीक है, क्योंकि ये सेकंड क्वाड्रेंट में जा रहा है, सेकंड क्वाड्रेंट में एक कॉस क्या होगा यहाँ पे, नेगेटिव. So for this, now eighth identity, cos of pi by 2 minus x which is equal to cos of pi by 2 cos of x, और यहाँ पे माइनस के लिए फॉर्मूला है प्लस वाला. ठीक है, साइन पाई बाय 2 साइन एक्स, दैट इज सिंपली विच विल बिकम साइन एक्स, साइन एक्स. सो ये इन्हीं आइडेंटिटीज का यूज करके हमें साइन एक्स प्लस वाई भी निकालना है. ठीक है, तो फाइंड साइन एक्स प्लस वाई, साइन एक्स प्लस वाई, दिस इज नाइन्थ आइडेंटिटी. नाउ साइन एक्स प्लस वाई कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ cos ऑफ पाई बाय 2. यहाँ पे साइन एक्स प्लस वाई को हम कैसे लिख सकते हैं, cos ऑफ पाई बाय 2 माइनस माइनस एक्स प्लस वाई ऐसे लिख सकते हैं, है ना, बाय यूजिंग दिस. सिंस दिस एंगल x इज x प्लस वाई, साइन ऑफ x इज इक्वल टू cos ऑफ पाई बाय 2 माइनस x, है ना, सिंपल है. तो अब हमें पता है कि cos ऑफ पाई बाय 2 माइनस x क्या होता है. ठीक है, cos पाई बाय 2 माइनस x, ये वाला फॉर्मूला यहाँ पे लगाओ, cos ऑफ पाई बाय 2 cos ऑफ x प्लस y, है ना, cos x cos y प्लस साइन, या फिर सिंपली ऐसे करो, cos ऑफ, इसे एडजस्ट करो क्योंकि यहाँ पे ऐसे नहीं होगा, माइनस एक्स, इसको एक पेयर बनाओ माइनस वाई. ठीक है, अब ये वाला जो पेयर है यहाँ पे इसे x बोल दो और ये वाला जो है यहाँ पे y बोल दो, दैट इज cos ऑफ पाई बाय 2 माइनस एक्स cos y, cos ऑफ y सिंपल, प्लस साइन ऑफ x साइन ऑफ y, साइन ऑफ पाई बाय 2 माइनस एक्स साइन ऑफ y, साइन ऑफ y. So here this cos of y by 2 minus x is equal to, simply cos of pi by 2 minus x क्या होगा, sin x होगा, sin x यहाँ पे cos y सिंपली एज इट इज रहेगा, sin pi by 2 minus x क्या होता है, cos of, हमने देखा है प्रीवियस लेक्चर में, sin of pi by 2 minus x is nothing but the plus cos of x. ठीक है, इसके पहले भी हमने देखा है cos of x and this is sin of y. Hence this will become sin of x plus y is equal to cos y sin x plus cos x sin y. और आप सब्सट्रैक्शन के लिए भी बना सकते हो, साइन ऑफ x माइनस वाई के लिए क्या आएगा, यहाँ पे देखो,
तो जब भी हम आइडेंटिटीज की बात कर रहे हैं तो सारी आइडेंटिटीज क्या होंगी, इसके ऊपर डिपेंड होगी। बाकी की आइडेंटिटी हम पार्ट 2 में देखेंगे, दिस इज पार्ट 1। तो इसके बहुत सारी आइडेंटिटीज है। तो यहाँ पे 10th हम देख लेते कि साइन एक्स माइनस वाई क्या होगा। साइन एक्स माइनस वाई विल बी, आपके लिए ये टास्क है, कॉस वाई साइन एक्स माइनस कॉस एक्स साइन वाई, यहाँ पे सब्सट्रैक्शन होगा, ठीक है। तो ये प्रूफ करना है आपको, साइन एक्स कॉस वाई माइनस कॉस एक्स साइन वाई, ये आप बाद में करोगे। आई होप यू अंडरस्टैंड दिस। और इसका यूज जो है ये बहुत जगह होता है। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, subscribe to my YouTube channel Math Buddy and press the bell icon for the more updates.